Hello friends, welcome to the platform of Darshanik. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik, I'm going to discuss with you one strategy based topic. And so generally guys, one of the issue that most of the students who are preparing for the exam generally face during these months of the preparation. And that question is whether they should skip this year's attempt, and especially first timer students who are doing the coaching, let's say from last June and appearing for the next year's prelim in May month. Okay, they start thinking for 3, 4, 5 months before exam that whether they should skip the exam, whether they should skip this attempt. Okay, so I'm going to address this question, and let me tell you first thing guys, whatever may happen, okay, if you are first timer, then you should not skip the attempt at any cost. Okay, you should give the attempt because there are many psychological and other reasons, strategy based reasons, and that's why don't even think to skip the attempts. And that question in detail I'm going to discuss with you, that should I skip the prelims attempt, okay, even if I am ill prepared, less prepared, should I take a risk? Okay, what if I fail in the prelims? I don't feel confident that I can crack this year's prelims, or my test series scores are not good enough. Then in all these cases, okay, should I, okay, attempt this exam or not? Should I skip this prelims attempt? Okay, I can always appear for the next year. Okay, but always remember guys that tomorrow never comes. Same way that next attempt I will be fully prepared. That is never happens in UPSC. And so let's discuss this issue that many first timer generally face. Should I skip this attempt? And so remember guys, he who fights can lose. Okay, he who doesn't fight has already lost. So if you are not going to fight the battle, half of the battles guys, students lose, okay, or anyone will lose is because he doesn't fight. And remember, whatever anxiety you are feeling that whether I should skip this attempt, I'm not prepared or not, it's not your own issue. Okay, lot of students are going to face or going to have the same dilemma, especially first timers. And so most of them going to quit, okay, and are not going to attempt in the attempt. And so most of them, when they are going to quit, okay, you need to stay in the process. Okay, half of the competition, or you have won, okay, already half the game just by staying in the competition. But if you choose to opt out, so why you are not ready to appear for the prelims? Why you think I won't be able to do the prelims? Because you fear the failure. You think that I won't be able to crack. But by not appearing, indirectly you have failed. Okay, indirectly. So whether you appear and fail and you don't appear, then it's as good as failing. And so always remember, he who fights can only lose because he fought. Okay, but he who doesn't fight has already lost the battle. Okay, so whether you appear and fail or you don't appear, then it's as good as failing in the exam. And there is no point saving the one attempt when you have already 6 attempts if you are general category, or if OBC SC/ST, then there are more attempts. Then don't even think of, okay, skipping the attempt. And this age factor also plays a role in calculation. That I will discuss with you next. 4 5 points I will have this debate. But always remember guys, it's better to fight and lose rather than being a coward and not even giving the exam, because not giving exam is as good as failing again. But you give exam and fail, or you don't give exam and fail, both are the same conditions. Then what's the point of not attempting? Okay, attempt and fail, even that will be much better than not trying and failing. And so he who doesn't fight has already lost. And so guys, now major reason that you don't want to attempt is that exam anxiety. Okay, I am not fully prepared and exam anxiety. So remember guys that no exam, okay, in our life is free of stress. Okay, every student, whether he is appearing for any exam, IIT, IIM se leke, normal 11, 12 se leke, exam anxiety is very natural process. Okay, and this is what the problem with India especially, because India mein the way parents nurture us, exam ka itna bada wo issue create kar dete hain that we when we grow up through socialization we acquire this exam anxiety. But you have to remember guys, okay, this exam anxiety is a universal thing. Okay, and every UPSC aspirant faces this exam anxiety. And that's why, and why, what is the reason for exam anxiety? That you think it's not that only losing, that I will fail, okay, but whether I will get good marks or not, okay, ये भी सारे issues है यार, whether I have studied
very well or not. Okay, and that's why one of the major reason of that is this perfectionist trap, that whether I'm fully prepared. And remember guys, this perfectionist trap is a very problematic thing, because no one, okay, ever feels prepared, fully prepared, especially at least for UPSC एग्जाम. चलो दूसरा कोई एग्जाम है आपका 11th-12th का, यू स्टैटिक सिलेबस, आपको प्रिपेयर करना है. यू कैन सर्टेनिटी के साथ यू कैन से आई हैव फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर माय 11th-12th इंजीनियरिंग के एग्जाम, यही 2-4 बुक्स है. यूपीएससी का सिलेबस गाइज एवरी न्यू ईयर उसमें इतना न्यू एडिशन, न्यू पॉलिटी, न्यू करंट अफेयर का, इकोनॉमिक्स, सो मेनी थिंग्स गेट एडेड. सो लेट मी टेल यू गाइज हाउ दिस एंजाइटी इज सो मच यूनिवर्सल, because I come across lot of my students who are already in service, okay, या मेरे वाइफ के जो बैचमेट्स है और अदर स्टूडेंट्स, ओके, whom I know, और उनके भी बैचमेट्स, बहुत सारे जो टॉपर्स है, इवन दे आर टॉप 50 रैंकर्स गाइज. यू गो एंड आस्क देम ऑनेस्टली कि इफ यू appear again, will you be able to crack the prelims, will you be able to get the same rank or score better rank? And let me tell you guys, no one can guarantee that they will crack the exam and will get the same rank or even better rank. Okay, most of them will not even say that I don't have a guarantee when I will be able to crack the exam. So even first 50-100 के जो toppers है, okay, they think that the next time when I attempt, there is no guarantee I will be able to even crack the exam guys. Then आपको तो first timer हो, ये जो 4-5 attempts देख के finally post ले चुके हैं, even they have no guarantee, okay, that next year they will crack the prelims. Maybe guys they will crack the mains, because mains is very strategic. Okay, बहुत सारा static part है, world history, art, architecture, etc. उसकी एक बार पढ़ाई की है, they will be able to score good. Essay ethics is very strong area. Once you know how to write good essay, they have written good essay, that's why they cracked the exam last time. Okay, they had a good score in ethics, that's why they managed to crack the exam last time. And they will be able to score again very good in essay and ethics. And GS 1, 2, 3 में तो average marks लगते हैं. I already recorded separate lecture, the significance of essay and ethics in mains. So with that, they will be able to crack the mains. Okay, definitely, and they will be able to get very good score. So many toppers will guarantee that I will crack the mains next year. With command on optional, they will guarantee I will crack the mains. Okay, next year if I appear again. But even top 10 ranker of UPSC can't guarantee that next year they will crack the prelims again. And many students who are already in the service guys, but didn't get good rank, and most of them take EOL, appear for the next prelim का attempt, but most of them even fail in the prelim के attempts में. And that's why अगर toppers में ये anxiety है, those who are already in service don't feel confident, they will crack the prelims. And that's the how nature of prelims. Syllabus is vast, it's open-ended, question can come randomly, okay, and doesn't matter how well you are prepared or whether you are already in service, okay, still people face or feel this exam anxiety. And so this exam anxiety is so universal that अगर 4-5 years के बाद भी after preparation, those who are already in service face that, so you are first timer, what a big deal. Okay, you shouldn't be bothered about it at all. Okay, give the exam with extreme confidence. Okay, but okay, give the exam guys, appear the attempt, don't skip the attempt, and avoid this perfectionist trap. Okay, no one thinks that he is fully prepared for prelims. He might think that my optionals are very well ready. He might think my mains ka essay, ethics, all these parts I have prepared well. But no one can say guys that I have prepared or fully prepared for the prelims. Okay, prelims is uncertain. That exam anxiety is universal, and that's why okay you need to avoid this perfectionist trap that I will be one day fully prepared or itna hi score आए, I will give the exam. टेस्ट सीरीज में इतना स्कोर आता है, दैट मीन्स आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड. नो, योर टेस्ट सीरीज का स्कोर एंड एक्चुअल रिजल्ट में भी देयर विल बी बिग डिफरेंस. टेस्ट सीरीज जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, दोज मार्क्स विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ओके, बट दे आर नॉट अल्टीमेट पैरामीटर. एंड सो परफेक्ट स्कोर आएगा व्हेन आई थिंक फुल्ली कॉन्फिडेंट. सारी किताबें मैंने एक बार पढ़ के 2-3 बार रिविजन किया है, स्टिल नो गारंटी गाइज. एंड सो ओके, ये अनसर्टेनिटी इतनी है, तो फिर वाई स्केयर दैट? हर कोई is going to feel that. So even if you are prepared average, even if you are prepared good, okay, you should appear for the exam. So first guys, okay, get rid of this anxiety, get rid of this fear of failure. Okay, मेरी wife ने, okay, when she was doing after engineering, she was doing job in Eaton Technologies private company, software company. That time she had a plan. She has thought from college days that she will appear for the UPSC exam. तो उस time she hasn't even prepared कि कोई कोचिंग भी नहीं की थी.
or any classes or any basic preparation. But while while doing job in the company, she already decided that she will go and appear for the one prelim just to see, to get the feel what kind of prelims is all about, what about this UPSC is all about, क्या इतनी बड़ी craze है उसकी. Zero prepared, she filled up the form, okay, और उस दिन मॉर्निंग में जाके she just checked out the paper in the exam hall. कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, बेसिक इंस्ट्रक्शन सिर्फ जो पढ़े थे मार्कशीट पे, सॉरी आपके हॉल टिकट पे, बस क्या क्या रूल्स है, शी ओनली प्रिपेयर्ड दोज. ओके, ऑब्वियसली शी फेल्ड, नॉट अ बिग डील, बट द एक्सपीरियंस शी गॉट कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. ओके, वो सारा जो एटमॉस्फेयर होता है एग्जाम में, ऑल स्टूडेंट्स हाउ मच दे केम प्रिपेयर्ड, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, जस्ट टू गेट द फील ऑफ द एग्जामिनेशन. शी appeared for the prelims, and then finally she decided that she will prepare fully for that, resigned from the job. फिर एक साल कोचिंग करके फर्स्ट अटेम्प्ट विथ 1 year कोचिंग, और वो भी कोचिंग जब उसने किया था, ओके, शी रिजाइन फ्रॉम द जॉब अराउंड अगस्त सितंबर अक्टूबर. उसका शी ज्वाइन द कोचिंग इन अक्टूबर नवंबर मंथ. ओके, अक्टूबर नवंबर मंथ में बहुत सारा कोचिंग का पार्ट ऑलरेडी फिनिश हुआ था. ओके, स्टिल शी ज्वाइन द कोचिंग, और उसके बाद शी प्रिपेयर्ड. ओके, 5-6 मंथ का ही कुछ ज्यादा कोचिंग ठीक से नहीं हुआ था, उसका प्रिपरेशन वाज आल्सो नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड. स्टिल शी गिव दैट ईयर का प्रीलिम्स, शी डिड नॉट स्किप द अटेम्प्ट. She failed again, not a big deal, but she had very well now prepared for that attempt. First time जो attempt दिया, a second attempt coaching, while doing the coaching, okay, she has prepared fully. She invested a lot of her energy. Automatically, okay, next attempt में, second attempt or third attempt technically, she cracked the prelim, cracked the mains, went up to interview, okay, but couldn't clear in that stage. But next stage में, prelim, mains, interview, all got cracked. So first get rid of this fear of failure, guys. Okay, if you have this fear of failure, then कोई ये यूपीएससी के एग्जाम, क्या कोई भी एग्जाम, या प्री भी क्रैक कर दो तो मेंस की एग्जाम या इंटरव्यू, you won't be able to face. So you should be very chill, cold-blooded person that way. ये स्थित प्रज्ञ जो भगवत गीता में कृष्णा टेल्स अर्जुन, okay, स्थित प्रज्ञ बनो, okay, और don't let your this emotions, okay, take control of you. So don't let anxiety decide. मेरे पास 6 अटेम्प्ट है ना, आई विल जस्ट गिव दिस अटेम्प्ट वेदर आई एम प्रिपेयर्ड फुल्ली और नॉट, बट आई विल गो एंड अटेम्प्ट. सो जस्ट अवॉइड दिस परफेक्शनिस्ट ट्रैप. नो वन कैन बी परफेक्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन. जो इतने साल से कोचिंग भी करे ना GS1 के लिए, ओके, इवन गाइज आई कांट गारंटी, आई टीच फॉर ऐसे इथिक्स पेपर एंड हिस्ट्री का, लेकिन इवन आई कांट गारंटी कि हिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, आई विल बी एबल टू स्कोर गुड, ओके, आफ्टर 9-10 years ऑफ द कोचिंग. And that's what, this is the reality. This is, you have to accept this exam is uncertain, its syllabus is vast, okay, and so whatever you are basically prepared, okay, you just have to perform better than others. You don't have to be a perfect, you don't have to score 150 or 120 plus, you just have to score better than others and cross the cutoff. Okay, that doesn't matter other students, how many other students are much have got higher marks than you. Okay, it doesn't matter, you just have to cross the cutoff, and that much of basic preparation if you feel that I have done, I will at least do the good. Okay, at least मेरे ज़्यादा negative नहीं होंगे, maybe I won't be able to cross the cutoff, but I have prepared so much that I will reach the cutoff. Even if you have that basic confidence, then you should give the exam. Okay, forget this exam anxiety, forget this perfectionist trap, go with the confidence and appear for the exam. Then उसके अलावा guys, there are some other factors that you need to understand why you shouldn't be skipping any attempt. And so, first of all, okay, this video is largely for the first timer students, but there are some conditions that those who are already preparing, okay, they have to consider whether to skip while deciding whether to skip attempt or not. But first of all, I will discuss from the first timers के perspective से. So which attempt it is? If it is first, then let me tell you, don't miss it at all. Okay, ऐसे बहुत सारे और भी recordings आपको मिलेंगे online कि whether you should skip attempt or not. Many teachers, faculties will also tell you, okay, skip the attempt if you are not fully prepared, ये वो. But trust me guys, I am telling you in the beginning itself, doesn't matter you are prepared, you 100%, there is a guarantee you will fail, still give the attempt. Still prepare for the attempt. It's not about that attempt, okay, it's about the next attempt also. Because whatever you are going to prepare for this attempt, okay, it is going to matter in the next attempt. And so if it's your first attempt, then don't at all miss the exam. Why? Two major reasons for that. First is guys, age and attempt calculation. Let's say this is your first attempt, you are prepared 1 year for the exam. Now in May month, it's your first attempt.
अब वो जो मे मंथ का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके, लेट्स से ये 24 की जो एग्जाम है, इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ये जो 24 की एग्जाम है, इफ यू फेल देन 25th का सेकेंड अटेम्प्ट, 23rd का 26th का थर्ड अटेम्प्ट, 27, 28, 29th का विल बी सिक्स्थ अटेम्प्ट, जिसका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, अज्यूमिंग यू क्लियर द एग्जाम, बाय May 2030. क्या आपको लगता है यू आर गोइंग टू बी इन द प्रोसेस टिल 2030? इफ यू हैव 6 अटेम्प्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी और SC ST OBC को तो ज्यादा अटेम्प्ट्स है, देन दे शुडंट इवन कंसीडर कि आप 2033 तक एग्जाम देने वाले हो. दैट्स स्टुपिडिटी अगर आप वो प्लान भी कर रहे हो तो. ओके, सो 3 साल फुल प्रिपरेशन और एक जो एग्जाम का, लाइक आई जनरली से कि इस साल का फुल प्रिपरेशन किया आपने, 24 का अटेम्प्ट दिया, 24 का फुल प्रिपेयर करो, 25th का अटेम्प्ट दिया, 25th का फुल प्रिपेयर करो, 26th का अटेम्प्ट दिया, और उसका रिजल्ट जब आएगा 27 तक, दैट शुड बी द एंड गेम. 27th का अटेम्प्ट, देन यू कैन गिव बट फाइंड फॉर द बैकअप प्लान. 3 साल का प्रिपरेशन और जो अटेम्प्ट दे रहे हो थर्ड अटेम्प्ट, उसका रिजल्ट आने तक जो 1 साल चला जाता है, 4 years फुल्ली यू नीड टू प्रिपेयर. उसके बाद के अटेम्प्ट्स प्लान करना भी इट्स अ स्टुपिडिटी. ओके, अनलेस ओके यू हैव कंटिन्यूअस सक्सेस कि सारे अटेम्प्ट में आप नेक्स्ट स्टेज को पहुंच पा रहे हो, मेंस इंटरव्यू. सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स वी शुड गिव इन UPSC एग्जाम, उसके लिए मैंने अलग से रिकॉर्डिंग किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे. यू डू चेक आउट दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू गिव इन UPSC एग्जाम. देयर आई हैव एक्सप्लेन दैट लॉजिक. सो यू चेक आउट दैट वीडियो. हियर आई एम गोइंग टू स्टिक टू द अटेम्प्ट के कैलकुलेशन को. एंड सो इफ यू प्लान, आपके पास 6 अटेम्प्ट्स है, देन योर 6th अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा 2030 में. इन 2024 आर यू गोइंग टू वेट 6 years? If yes, then that's stupidity, and if no, that's good. And if no, then don't waste your attempt. Okay, appear for the attempt. Even if you fail, doesn't matter. Then appear for the attempt. And secondly, guys, there is a psychological motivational aspect. Okay, I told you exam anxiety is universal, but when you have that quitting mentality, na escaping attitude, that I will not give this year ka prelims ka attempt. Next year you will give the prelims. By chance you clear it, but you are not prepared for the mains. You will say नहीं यार मेंस का भी लग नहीं रहा, चलो ऐसे ही जाके देते हैं, प्रीलिम निकला है, आई विल गिव द मेंस. ये एस्केपिंग एटीट्यूड बन जाता है. बट फेदर सक्सीड, सक्सेस और फेल्यूर, आई विल अपीयर दिस अटेम्प्ट. देन विद दैट मोटिवेशन गाइज, वॉट एवर 5-6 months you are going to do, you are going to prepare a lot. So guys, this attempt that you are giving, if you are skipping or already having that escaping attitude, first of all you are not going to study for this 5-6 months. And you are not going to study for this 5-6 months. Okay, and next year जो आप अगले प्रीलियम तक प्रिपेयर करने वाले हो, okay, जून के बाद जो नेक्स्ट प्रीलियम 1 साल बाद आने वाली है, okay, no one has that kind of mentality कि मैं पहले जून से ही, ये साल का प्रीलियम खत्म हुआ, मैंने इस साल का प्रीलियम नहीं दिया था, बट आई एम प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रीलियम, तो मैं जून मंथ से ही फुल्ली प्रिपेयर करूंगा, 10-10-12 घंटे करूंगा. नॉट पॉसिबल. एग्जाम बहुत दूर है, टारगेट बहुत डिस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी लेस, 5-6 घंटे पढ़ो, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लो, एटसेट्रा, विच इज नेचुरल. तो वैसे ही 3-4 महीने, 5 महीने यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी, और फिर दिसंबर मंथ में, नवंबर मंथ में यू विल स्टार्ट फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, एंड अगेन यू विल फील द सेम एंग्जाइटी, यार प्रिपरेशन नहीं हुआ, व्हाट शुड आई डू. So it's not about this attempt. You are then, when you skip this attempt, you are indirectly impacting your second attempt also. But even if you fail, but I will give this attempt, and with that preparation when you go, आप ये 4-5 महीने भी इतना ज्यादा पोटेंशियली पढ़ोगे. ओके, एंड आगे फिर प्री के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ योर बेसिक इश्यूज, बेसिक डाउट्स, व्हाट चैलेंजेस स्टूडेंट फेस इन द प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम, व्हेन आई गिव द एग्जाम, व्हाट वाज द साइकोलॉजिकल कंडीशन, okay, all this feel of the examination, everything you get, and so next time when you go, when you prepare for the next prelim ka attempt, ये सारा value addition जो आपने you already read, it is going to cause the value addition. You are going to be more better than the previous prelim के attempts में. And by doing this, last year का prelim attempt doesn't matter, you failed, but जो next attempt दे रहे हो, you are much better prepared compared to all your competitors. So you did not waste this year का attempt, and also okay, and whatever you prepared going to help you out, and आपका जो standard है preparation का, it is going to raise much higher compared to all those competitors who decided to skip the attempt, escape the attempt. अब मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ 200 स्टूडेंट्स होते हैं अराउंड ऑफलाइन क्लासेस में, wherever I teach, 200 स्टूडेंट्स में भी okay, hardly guys, when I ask in the classroom, exclusively I ask in the classroom, how many of you are planning for this year's
प्रीलियम, अब आप जून से कोचिंग कर रहे हो, ओके, नाउ नेक्स्ट मंथ मैं मार्च में एक सेंटर में जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, 200 स्टूडेंट हो गए मॉर्निंग इवनिंग बैचेस में, एंड आई आस्क देम दिस क्वेश्चन। अब उनकी बैच तो जून से चल रही है, 8 महीने 7 महीने हो गए, 1-2 महीने में खत्म होके दे विल अपीयर फॉर द प्रीलियम्स, एंड आई आस्क देम हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव द प्रीलियम्स। हार्डली 200 में से 10-12 स्टूडेंट्स की हाथ ऊपर होते हैं। मान भी लो 10-12 फेल भी हो जाए, विच इज नॉट गारंटी, क्योंकि अभी लास्ट ईयर मैं जब दिल्ली में पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को इंसिस्ट किया जो मुझे लगा यूपीएससी मटेरियल स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी गुड और वेल प्रिपेयर्ड, और ऐसे जो स्टूडेंट्स है आई फोर्स देम, ओके, इनिशिएटेड देम कि गिव द अटेम्प्ट, गिव द एग्जाम, डोंट गेट स्केर्ड ऑफ द एग्जाम। वो 200 में से ऐसे 8-10 स्टूडेंट वो अपीयर्ड, उसमें से 2-4 उसी प्रीलियम में इवन दे क्रैक द प्रीलियम। लेकिन इवन इफ दोज हु कुडंट क्रैक द प्रीलियम्स गाइस, वो जो प्रिपरेशन दे डिड फुल्ली, वो 3-4 महीने दैट एनर्जी दे इन्वेस्टेड, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिसेस दे डन, okay, now all those students when they are giving this 24th attempt, they are very well prepared. So remember, this is not about the attempt, this is about the year, this is about the next attempt also, okay, and so you need to be thinking from that perspective, psychological motivational aspect. If you don't prepare for this attempt, वो escaping mentality है, and at the same time when you don't prepare for this attempt, plan for next attempt, okay, you are going to waste lot of months that you could channelize in your preparation, okay, and psychologically no one thinks कि मैं अब अभी आप जैन में फेब में डिसाइड करो कि मैं नेक्स्ट ईयर का प्रीलियम दूंगा, जून का, 1.5 साल बाद का, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फुल्ली फॉर द एग्जाम, यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ मंथ्स, लॉट ऑफ योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, एंड व्हेन यू आर यंग गाइज, 21, 22, 23 का आपका एज है, 24, 25 के रेंज में एज में हो आप, एज लिमिट का तो इश्यू नहीं, देन देयर इज नो पॉइंट स्किपिंग द अटेम्प्ट, एंड सेकेंडली दिस इज नॉट अबाउट द अटेम्प्ट alone, this is about the age also, this is about the year also. You are wasting 1 year of your life, 1 year of your preparation, and that youthful years में एक ये साल वेस्ट करना, that is very costly, okay, and that's why it's not about the attempts, it's about the year that you are wasting. You need to invest your year fully, and only when you fully invest, okay, in this year, okay, it doesn't matter you fail, but you have that investment is going to give you return in the next attempt. But if you waste this year, okay, you are not wasting even this attempt, you are even impacting next attempt, and this whole year you will be spending doing nothing, or even if you study little, you won't be studying with that force, with that motivation, psychological tendency. But when you prepare कि कुछ भी हो जाए, I am going to give this attempt, चलो ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स आई वोंट बी एबल टू फिनिश, पूरा हिस्ट्री आई विल पुट फॉर ऑप्शनल, पूरा ज्योग्राफी आई वोंट बी एबल टू फिनिश, आई विल कीप इट असाइड, पूरा पॉलिटी आई वोंट बी एबल टू स्टडी, आई विल कीप वन सब्जेक्ट असाइड, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स हो सके आई विल प्रिपेयर फुल्ली, आई विल गो विथ दैट प्रिपरेशन। करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो करंट अफेयर आई विल प्रिपेयर फुल्ली, हिस्ट्री ज्योग्राफी आई विल डू, पॉलिटी नहीं हो रहा आई विल कीप इट असाइड, ओके, बाकी सब्जेक्ट्स आई विल कवर, and I will appear for the exam, but do appear for the exam, okay, and that's why it's not about attempt, it's about year. And uncertainty involved, I told you, no one can say with certainty, even topper guys, जो सारे पिछले 10 साल के यूपीएससी के टॉपर पकड़ लो, ऑल इंडिया रैंक 1, और इवन okay, किसी एक को भी you bring in front of me, और कोई भी ऑनलाइन वीडियो पे बताओ कि कोई ये बोल रहा है that he will be able to crack next year का prelim, he will say he will get the same rank अगर prelim crack हो जाए मेंस में, but prelim मेरी crack होगी 100% गारंटी के साथ। लास्ट 10 साल के भी यूपीएससी के टॉपर ले लो, no one can say that, okay, and that's why हाँ, अगर सीसैट क्वालिफाइंग नहीं होता, सीसैट के मार्क्स काउंट होते, then जीएस बहुत अनसर्टन है, लेकिन सीसैट कैन बी मैनेज्ड, और वो सीसैट पे बहुत स्कोर करके एग्जाम क्रैक भी कर देते, बट विदाउट सीसैट, ओके, क्वालिफाइंग प्रीलियम में नो वन कैन हैव दैट गारंटी। So everyone who goes for the exam, even toppers, they go for the exam, they only go with the confidence about their preparation, not about the confidence of giving the exam. और यही बहुत साल पहले कृष्णा ने भगवत गीता में यही बताया था अर्जुन को, कर्म कर, ओके, यू जस्ट फाइट द बैटल, ओके, वॉर में क्या रिजल्ट आएगा, डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट, यू जस्ट प्रिपेयर द बैटल, प्रिपेयर फॉर द बैटल, एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर द बैटल, जो वॉर से पहले इतने साल you went to prepare yourself, acquire this archery का knowledge बढ़ाओ, so if you are confident about your preparation ना, you will win the battle, just be confident. So सारे जो toppers भी है guys, they go and face the exam anxiety, and they also have exam anxiety, but they go and face the exam, okay, on a confidence that they have in their preparation, not
because they have the confidence that they will be able to crack the exam. They just go, okay, उसी preparation के भरोसे. So no one has or no one can say with certainty they will crack the exam. You are first timer, then you shouldn't worry at all, or never think about that certainty के बाद ही, perfection के बाद ही I will give the exam. Then prelim is a filter, marks not counted. Okay, मेंस इज द मेन एग्जाम, इसलिए तो मेंस को मेन एग्जाम बोला जा रहा है. और चलो आपका बेसिक प्रिपरेशन है, आपको तो सिर्फ इतना ही करना है दैट यू हैव टू जस्ट टच द कट ऑफ, ओके, क्रॉस द कट ऑफ. डजंट मैटर दूसरे आपके फ्रेंड को 150 160 मार्क्स भी आए जीएस में, विच इज इम्पॉसिबल, और आपका 92 कट ऑफ था, यू गॉट 92 एग्जैक्टली, यू क्रॉस द गॉट सिलेक्टेड. दैट्स इनफ गाइज, क्योंकि ये मार्क्स आर नॉट गोइंग टू गेट काउंटेड इन मेंस. योर रैंक, योर फ्यूचर इज ऑल अबाउट मेंस. मेंस मार्क्स गेट काउंटेड. तो आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स है, एंड मेंस इज गाइज, व्हेन आई कंटिन्यूअसली टेल, मेंस इज मच मोर इजी देन द प्रीलिम्स, बिकॉज इन मेंस में यू कैन यूज लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी. मेंस में यू कैन डू हार्ड वर्क एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क. Means में you write essay, get a feedback, you can understand what went wrong in my essay, you can improve the essay. In ethics, you can work out ethics answers, prepare well, read right kind of stuff. You don't read this masala content, okay, read real content that UPSC needs, and with that try to solve case studies, etc. And if you think you will be able to crack UPSC ki case studies, etc., then okay, get the feedbacks, you will be able to crack the exam. Or optional maybe same condition. So mains is something that you can plan with the strategy. Mains mein there is guarantee, you can see the relation between hard work and result. Prelims mein that logic, okay, cause effect, yeah, hard work and success relation is not so directly you can't establish. But doesn't matter, your final success, final rank, everything is about mains exam. तो prelim का कितना preparation doesn't matter. If you know कि essay ethics मेरा prepared है अच्छे से, या ऑप्शनल भी ठीक से किया है, तो प्रीलियम मुझे सिर्फ क्रैक करनी है, उसके बाद माय सक्सेस इज बेस्ड ऑन मेंस. सो गो विद दैट कॉन्फिडेंस. और अगर आपका मेंस भी प्रिपेयर नहीं है ठीक से, डजंट मैटर, 4-5 मंथ्स आर गुड इनफ टू गेट डन विथ एसे, गेट डन विथ इथिक्स. एसे इथिक्स का प्रिपरेशन तो 1 महीने में यू कैन लिटरली डू फुल्ली. ओके, मैंने मेरे ऐप पे दार्शनिक IAS के एसे इथिक्स के कोर्सेज आई हैव बीन लॉन्च्ड. ओके, इथिक्स का कोर्स, एसे का कोर्स, ओके, 1 महीने में यू कैन रीड ऑल द कंटेंट. एंड आई ऑलवेज गारंटी कि अदर देन माई एसे इथिक्स नोट, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग. माई क्लासेस, माई नोट्स, और उसके बाद जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने में एसे इथिक्स यू कैन प्रिपेयर. रिमेनिंग वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जो स्टैटिक पार्ट है वो भी 1 आध महीने में, और 2 महीने ऑप्शनल में भी अच्छे से इन्वेस्ट करो. दैट कैन बी मैनेजेबल. सो मेंस इज मच मोर मैनेजेबल, ओके, कंपेयर टू द प्रीलिम्स. एंड मेंस डिसाइड द फाइनल आउटकम, रैंक. प्रीलिम में आपको कितना ज्यादा स्कोर किया, नो वन इज गोइंग टू आस्क. बहुत सारे स्टूडेंट 120 130 भी स्कोर करते प्रीलिम्स में, बट फेल इन द मेंस. और दोज हु जस्ट टच द कट ऑफ स्कोर वेरी हाई इन द मेंस. सो टीना डाबी फॉर एग्जांपल, प्रीलिम में शी जस्ट टच द कट ऑफ, ओके, एंड लेकिन मेंस में शी बिकेम द ऑल इंडिया टॉपर. दैट कैन हैपन. सो इफ मेंस इज डिटरमाइनिंग फैक्टर, प्रीलिम्स इज ओनली फिल्टर, देन व्हाई गेट स्केयर्ड ऑफ द फिल्टर? ओके, मार्क्स नॉट काउंटेड ऑफ द प्रीलिम्स, तो जस्ट यू हैव टू रीच कट ऑफ. बेसिक प्रिपरेशन में भी यू कैन रीच द कट ऑफ. आपका पॉलिटी प्रिपेयर नहीं था, यू केप्ट द पॉलिटी असाइड. अदर सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर किए. लकीली पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आए उस साल. योर हिस्ट्री वाज गुड. हिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चंस आ गए. एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्किटेक्चर, कल्चर, बहुत आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला. यू क्रैक द प्रीलिम्स, कैन हैपन. ओके, and that's why prelims is just a filter. Then don't get scared of the filter. Marks are not counted. Mains is the main exam. Okay, and if you are fully prepared for that, or even if you're not prepared, I told you mains is manageable. Then don't get scared of the prelims. And prelim is always uncertain. Then you shouldn't be getting scared of that. So give prelims even if not prepared for mains. What matters is learning from the experience. तो इसलिए learning from the experience, बहुत cases guys, trust me. Okay, जितने भी साल में पढ़ा रहा हूं, इतने केसेस देखें. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर फॉर द प्रीलिम्स, ओके, डोंट अपेयर फॉर द प्रीलिम्स. नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स क्रैक, मेंस दिया, वो मेंस न्यू है, वो फेल हो गए. नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, ओके, एंड इंटरव्यू को गए, वो भी पहला इंटरव्यू वो फेल हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम ही नहीं निकली. मेनी रैंडम कॉम्बिनेशन हैपन. ओके, जो 2-3 बार इंटरव्यू को जा चुके हैं, ओके, डोंट क्रैक द प्रीलिम्स द नेक्स्ट ईयर, कैन हैपन. बट पॉइंट इज गाइज, ये जो आपका लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्या प्रीलिम फेज जो किया आपने, उसके लिए जो बेसिक प्रिपरेशन किया, व्हाई आई फेल्ड, या मैंने तो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा था,
पॉलिटी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन ऑन स्पॉट क्या गलतियां हुई, हाउ आई एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स एंड सो ऑन, ये जो सारा साइकोलॉजिकल लर्निंग है मैटर्स। उसके बाद इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस आल्सो, प्रीलिम बाय चांस निकल गई आपकी, यू अपेयर्ड फॉर द मेंस, मेंस में भी ऐसे लिखा था मैंने, मुझे तो बहुत लगा था अच्छा ऐसे लिखा, बहुत बुरे मार्क आ गए, फिर क्या गलती हो गई, गो एंड डिस्कस विद द टीचर फैकल्टी, इथिक्स ऐसे से पढ़ा था फिर भी कम मार्क्स आ गए, क्या करना चाहिए था। ओके, यू दैट लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस मैटर्स। ऑप्शनल तो बहुत पढ़ा था, फिर मार्क्स क्यों नहीं पेपर 2 में, या पेपर 1 में बहुत मार्क्स आए ऑप्शनल के, पेपर 2 में कम आ गए, ऐसा क्यों हो गया, और ऑप्शनल सारा थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से पता था मुझे, तो एम आई बैड एट अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग। ये जो सारा लर्निंग है, या इथिक्स में मुझे सेक्शन 1 के क्वेश्चन तो आराम से आ गए, केस स्टडी में बहुत दिक्कतें आ रही थी, सो नेक्स्ट टाइम मुझे केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, ये जो सारा लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। फिर जीएस 1 2 3 में बहुत पढ़ा था, लेकिन 90 भी कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा, 100 क्रॉस नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर इसके लिए क्या रिस्ट्रेटेजाइजिंग करूं, ये जो सारी चीजें लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, दैट मैटर्स मोर। ओके, क्योंकि वही काम आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन ये का इस साल का प्रीलियम ही नहीं दिया, मेंस का तो सवाल ही नहीं, नेक्स्ट ईयर का प्रीलियम फ्रेश, नो लर्निंग यू हैव, नो एक्सपीरियंस यू हैव, नो बेसिक प्रिपरेशन यू हैव, सारा कुछ अगेन न्यू, अगेन एग्जाम एंजाइटी, और वो क्रॉस भी हो गया, मेंस के लिए अगेन सेम प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रीलियम्स में, या तो प्रीलियम में एक फेल होके भी एक्सपीरियंस आएगा, क्रैक होके मेंस में भी फेल हो जाओ उसका एक्सपीरियंस आएगा, बट एक्सपीरियंसेस मैटर ट्रिमेंडसली, क्योंकि आगे के अटेम्प्ट में दे आर गोइंग टू मेक ओके वास्ट चेंज, दे आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। और सिर्फ अटेम्प्ट देके यू आर डिफीटेड लॉट ऑफ योर कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाई गिव प्रीलियम्स इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। व्हाट मैटर्स इज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस नाउ। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए तो I tremendously insist, go fail but give the exam. But if you are already given lot of attempts and you think I was skipping this attempt because you have invested your energy in some backup plan, some CDS exam, banking exam, state PCS ka exam, etc., and you have totally diverted yourself from UPSC ka preparation, then in that case, as a backup plan, okay, then you can take a skip the attempt. That can be done. But remember, while you are preparing for the backup plan, also you need to consider attempt and age eligibility. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 3-4 साल जॉब करके प्रिपरेशन में आते हैं, 24-25 के अराउंड, मे बी देन 26-27 के एज में भी, देन मोस्ट ऑफ देम गाइज, या दोज हु आर ऑलरेडी फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर पीसीएस एग्जाम, क्रैक द प्रीलिम्स का एग्जाम, ओके, और उस क्रैक द पीसीएस का पोस्ट, उसमें 2-4 साल चले गए, फिर आफ्टर क्रैकिंग द पीसीएस की एग्जाम, ओके, दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। तो ऑलरेडी यूपीएससी का प्रिपरेशन वो 26-27 के एज में कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो उनके पास एज का लिमिट होगा, डजंट मैटर अटेम्प्ट कितने अवेलेबल है, तो उस केस में तो यू हैव टू टेक दैट ऑल्सो इनटू अकाउंट, तो विच इज वेरी सेंसिबल एंड लॉजिकल थिंग। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स गाइज, ट्रस्ट मी, ओके, एंड गिव दिस अटेम्प्ट। ओके, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं ज्यादा, दैट ये जो सारे स्टूडेंट्स के केसेस देखें, that if you give the attempt, skip the attempt, they don't prepare, पूरा year waste कर देते हैं, but जो prepare करते हैं, okay, they get lot of confidence for the next attempt, वो confidence, वो preparation के base पे they easily crack the exam. So this is not about this attempt, this is about your entire preparation, this is about next attempt, this is about entire year. You are not skipping attempt, you are skipping year, you are skipping the next attempt also indirectly, okay, and that's very escaping attitude will never help you. And so to conclude guys, okay, with few quotes, motivational quotes, that winning means being unafraid to lose. If you want to win, okay, then be ready to lose and be unafraid of losing. Okay, you shouldn't be having this fear of failure. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. अगर फेलियर का डर ही नहीं लगता, कितना भी बुरी तरह मैं फेल हो जाऊं, okay, consider it as a stepping stone for success. मेरे फादर के एक फ्रेंड है, उनका बेटा, ही इज आईआईटी ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, ही वेंट टू अमेरिका, वाज डूइंग जॉब इन सिलिकॉन वैली, ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज इन्वेस्टिंग हिज एनर्जी इन सम बिजनेस, और एक बार, एंड ही मेड वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, एंड आई वाज टॉकिंग विथ हिम, एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी कि अमेरिका, यूरोप में, सिलिकॉन वैली में गाइज, इफ यू स्टार्ट इन स्टार्टअप एंड मिजरेबली फेल, बहुत बुरी तरह आपका स्टार्टअप डूब गया, and now someone is from Harvard, Stanford with very good academic record, and now they have to hire 2 people, one from your Harvard, Stanford with good academic record,
and one from normal university and failed miserably in the his startup, they will hire the candidate who has failed miserably because they know he has learned from his experience that how businesses can fail. And why अमेरिका वगैरह में इतना entrepreneurial spirit है? Because guys, major one reason, they don't fear the failure. इंडिया में the way we are nurtured to fear the failure, सेफ्टी में रहो, ओके उसी की वजह से ये एग्जाम एंग्जाइटी, ये चीज आपके साथ हो रही है. इट्स नॉट योर प्रिपरेशन का फॉल्ट, ओके ये सोसाइटी ने आपको उस तरह से कंडीशन किया है. सो गेट रीड ऑफ दैट सोसाइटल कंडीशनिंग और अपने बेस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे यू गो एंड गिव द एग्जाम. द फियर ऑफ फेल्योर सोसाइटी ने इंकलकेट किया है. इंडिया का जो प्रॉब्लम है मेंटेलिटी का, कि इंडिया में जो बच्चे काफी अच्छा स्कोर या एजुकेट होते हैं, दे गेट एजुकेटेड, दे गेट ग्रेजुएटेड टू गेट रिस्क फ्री जॉब्स and to settle in the job. अमेरिका यूरोप में when they educate, okay, the things they do first, कि चलो इतना मैंने पढ़ाई की है, now what risk I can take. They educate and prepare themselves for the risk taking. इंडिया में we educate and graduate ourselves for comfort or for no risk jobs. और यही जो मेंटेलिटी है that avoids this risk taking, fear of failure, लेकिन ये सोसाइटी ने ज्यादा आपके माइंड में डाला है, पेरेंट्स फैमिली में ने ज्यादा आपके माइंड में डाला है. वंस यू गेट रीड ऑफ इट, यू विल बी मच बेटर इन वॉट एवर यू डू, एंड दैट्स वाई ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन अचीव ग्रेटली. करेज इन डेंजर is half the battle. Okay, and so courage in danger is half the battle. Half of your competition is going to lose, okay, because just they are not going to try in the exam. Okay, हाफ भी नहीं, बहुत ज्यादा रेशियो है गाइस. अंडरस्टैंड, जो 200 स्टूडेंट्स होते हैं, आई टोल्ड यू इन द क्लासरूम, सिर्फ 10-20 ही प्लान फॉर दिस ईयर का प्रीलिम्स. सो मेनी स्टूडेंट्स आर जस्ट क्विटिंग द कंपटीशन. And so if you don't fight the battle, I told you, you're already lost. And so courage in danger is half the game, half the battle. So to win the game, just remain in the game. And that's all it needs. Just remain in the game. Just play the game. Even if you fail, okay, that you played the game. That's what all matters. And so don't think about even skipping after this video. Okay, close this video, open your books and start preparing for your prelims. Okay, so that's all for now guys. Thanks for listening and stay tuned to my Darshanik IAS YouTube channel. Okay, and also other strategy related lectures you will find there. You take help of those, and then also you can join me on UPSC Ethics for Telegram channel. And I have launched my Darshanik IAS app on Google Play App Store. You can quickly you can enroll there for these courses. And as I told you, okay, for essay ethics, this my course will be one-stop solution, final solution. You don't have to prepare anything else, okay, than these courses. So do crack your prelim exam and get ready for the mains. So thanks for listening guys and stay tuned.